Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the chapter number 7, rate analysis. Okay, calculation of the quantities. The first one is brick machinery. Number of the bricks required for 1 meter cube of the brickwork. तो कितना 1 मीटर क्यूब के लिए कितनी नंबर ब्रिक्स चाहिए, तो वो फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक इज 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर. Then nominal size of the brick masonry with the mortar joint is 20 centimeter by 10 centimeter by 10 centimeter. Therefore 1 meter cube brick machinery 1 मीटर क्यूब के लिए कितना चाहिए, तो नंबर ऑफ द ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक वर्क 1 मीटर क्यूब. Volume of the 1 meter cube brick with mortar joint is this. तो कितना आया 500 नंबर्स आया. Therefore 1 meter cube of the brick machinery 500 bricks are required. Mortar for 1 meter cube of the brick work. कितनी mortar 1 meter cube brick work के लिए चाहिए, the actual volume if bricks is 1 meter cube of the brick machinery, तो 500, 0.19, 0.09 and 0.09 this standard size है, तो that is 0.77 मीटर क्यूब. अभी therefore wet mortar in 1 मीटर क्यूब of the brick machinery कितना आएगा, 1 टोटल वॉल्यूम है उसमें से 0.77 ब्रिक्स का निकाल दो तो क्या मिलेगा, मोटार का मिलेगा. फॉर फ्रॉक फिलिंग, कट ब्रिक्स, फॉर बॉन्डिंग, वेस्टेज एक्सेट्रा इंक्रीज दिस क्वांटिटी बाय 15%. तो ये फ्रॉक फिलिंग वगैरह और जो भी बॉन्डिंग वेस्टेज वगैरह के लिए हम कितना 50% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं. देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द वेट मोटर इज इक्वल टू 0.23, तो है ही वेट मोटर प्लस एक्स्ट्रा कितना ऐड करना है 0.15 इंटू 0.23, that means 0.264 meter cube. Volume of the dry mortar reduced by 25% when the water is added. जब भी हम पानी डालते हैं तभी उसका वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस होता है ड्राई मोटर का. तो अभी ये हमने रिड्यूस हुआ लिया हुआ वॉल्यूम लिया है. ओके, रिड्यूस किया गया जो भी, therefore वॉल्यूम ऑफ वेट वाटर इज इक्वल टू 0.264 है. तो ड्राई मोटर का क्या होगा, ड्राई में हम ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, रिड्यूस होगा. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द ड्राई मोटर इज इक्वल टू कितना ऐड करना है 0.264 तो है, पर 0.25 इंटू 0.264 ऐड करना है, दैट मीन्स 0.33 मीटर क्यूब. Therefore, for 1 meter cube of brickwork, 0.33 meter cube of mortar is required. Materials for the 1 jam 6 brickwork. The quantity of the brickwork is 10 meter cube. Proportion 1 jam 6 है. Volume of dry mortar 0.33 है. Therefore, volume of the dry mortar for 10 meter cube कितना आएगा, 0.33 into 10. That means 3.3 meter cube. 1 jam 6 is equal to total 7. 1 that means cement and 6 that means sand. For 1 bag of cement that is 50 kg, उसका वॉल्यूम कितना है 0.035. Therefore the cement is equal to 1 divided by 7 into 3.3, that means 0.4714 meter cube. ओके, ये मीटर क्यूब डिवाइड बाय क्या है, उसका वॉल्यूम करेंगे तो क्या मिलेगा, कितनी बैग नंबर ऑफ बैग चाहिए, तो 13.47 बैग्स चाहिए. सैंड कितना है 6 डिवाइड बाय 7 इंटू 3.3. ओके, दैट इज 2.83 मीटर क्यूब. द नेक्स्ट वन इज कॉन्क्रीट वर्क. फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ विट compacted concrete, dry volume is then taken about 52% more. ओके, तो 1 मीटर क्यूब क्या है, वेट वॉल्यूम है, और अभी हमें ड्राई वॉल्यूम लेना है तो 52% एक्स्ट्रा लेना है, दैट इज 1.52 मीटर क्यूब ड्राई कॉन्क्रीट. क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स फॉर M20, 1 jam 1.5 jam 3 सीमेंट कॉन्क्रीट. वॉल्यूम ऑफ वेट कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. ड्राई कॉन्क्रीट का वॉल्यूम कितना है 1.52 मीटर क्यूब. प्रोपोर्शन इज 1 jam 1.5 jam 3. तो CSA, C that means cement, S that means sand, and
that means fine aggregate, and A that means coarse aggregate. Therefore cement is equal to 1 divided by 1.5 1 divided by 5.5 into 1.52. ओके, तो क्या मिलेगा 0.2763 मीटर क्यूब। दैट मीन्स ये आपको मिला डिवाइड बाय जो भी सीमेंट का वेट है, सीमेंट का जो वेट है वो डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ बैग्स मिलेगा। सैंड इज सैंड का प्रोपोर्शन करना है तो सेम टू सेम 1.5 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 1.52, और एग्रीगेट्स का अगेन 3 डिवाइड बाय 5 दैट मीन्स ये प्रोपोर्शन दिया है 1.5 जैम 3। टोटल यहाँ पे लिखा है कितना है, टोटल 5.5 जो है डिवाइड किया है, और जो भी हमें ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम मिला वो इनसे मल्टीप्लाई किया है, तो आपको क्या मिलेगा, इतना मीटर क्यूब मटेरियल चाहिए। द नेक्स्ट वन इज प्लास्टरिंग। फॉर फिलिंग अप द जॉइंट्स and for uneven 30% more mortar is required. To get the dry volume of mortar, weight volume may be further increased by 25%. Materials for the 100 meter cube area and 12 mm thick plaster, volume of mortar is equal to 100 into 0.012 is equal to 1.2 meter cube. For filling up the joints and for uneven surfaces, 30% more mortar is required. That means, therefore, volume of the mortar is equal to 1.2 into 1.3, that means 1.52 meter cube. To get the dry volume of mortar, weight volume may be further increased by 25%. Therefore, volume of the dry mortar is equal to 1.56 into 1.25, that means 1.95 meter cube. Proportion is 1/4 is equal to 5. Cement is equal to 2. ओके, तो क्या मिलेगा आपको 11.50 bags. Sand 4 divided by 5 into 2, that means 1.6 meter cube. Materials for 100 meter square, 1 jam 3, 20 mm thick plaster. The volume of wet mortar is equal to this 100 into 0.020, that means 2 meter cube. Then next, here the thickness of the plaster is 20 mm. Therefore, mortar required for filling the joints and uneven surfaces, 20% more mortar is required. Therefore, volume of the wet mortar is equal to 2 into 1 to 2.4 meter cube is equal to 2.4 meter cube. To get the dry volume of mortar, wet mortar may be further increased by 25%. तो क्या करना है आपको, therefore volume of the dry mortar is equal to 2.4 into 1.25 is equal to 3 meter cube. Proportion is 1/3 is equal to 4. Therefore cement is equal to 1 divided by 4 into 3, that means आपको मिला 0.75 meter cube. Okay, is equal to 0.75 divided by 0.035, that means 21.43 bags. Okay, sand 3 by 4 into 3, 2.25 meter cube. Calculation of the wearing course. The calculation of the materials for the different types of wearing course may be done as follows. Single coat of surface drain, description of the item, serial number and quantity of the materials required. The single coat of the surface dressing or the first coat or of 2 coat surface dressing. तो बिट्यूमिन कितना चाहिए, स्टोन चिप्स कितना चाहिए, सैंड कितना चाहिए, वो प्रोपोर्शन लिखा है। क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कितनी क्वांटिटी मटेरियल की चाहिए वो लिखा है। सेकेंड कोट ऑफ 2 कोट सेकेंड कोट ऑफ 2 कोट सरफेस ड्रेसिंग. Okay, then 25 mm thick premix carpet on water bank macadam surface. Bitumen कितना चाहिए, ओके, at 100 kg per meter cube, kg per 100 meter cube, तो 220 plus 100 that means 320. स्टोन चिप्स कितना चाहिए, बिट्यूमिन कितना चाहिए, वो सब अंदर
क्वांटिटी लिखा है। ऑन ब्रिक टॉप ऑफ कॉन्क्रीट सरफेस बिट्यूमिन कितना चाहिए। ओके, तो उसका क्वांटिटी केजी, इसका वेट लिखा है कि इतना बिट्यूमिन चाहिए। देन बिट्यूमिनस सरफेस मिलर मिक्सचर, अगेन इसमें क्वांटिटी सब लिखा है कि इतना इतना मटेरियल चाहिए। टेक कोट ऑन WBM surface on black top surface pre-seal coat। ओके, कितना मटेरियल चाहिए था, इतना। लिक्विड सील कोस्ट, इतना मटेरियल चाहिए। आसफाल्ट कंक्रीट 50 mm थिक, इतना मटेरियल चाहिए। इसमें मटेरियल लिखा है कि कितना मटेरियल सब में चाहिए। ओके, then next prepare rate analysis for the RCC work in 1 jam 1.5 jam 3 for the slab. The materials required is 1 jam 1.5 jam 3 grade of RCC for 10 meter cube. Weight volume of concrete is equal to 10 meter cube. Dry volume of concrete is equal to 10 into 1.52 meter cube, that means 15.2 meter cube. Total parts of concrete is equal to 1 plus 1.5 plus 3, that means 5.5 parts. Volume of the concrete cement is equal to 1 divided by 5.5 into 15.2, that means 2.76 meter cube. Number of the bags of the cement is equal to 2.78 divided by 0.035 is equal to 78.76 bags, say 79 bags. Then volume of the sand is equal to 1.5 divided by 5.5 into 15.2, that means 4.15 meter cube. Volume of the aggregate 3 divided by 5.5 into 15.2, that means 8.29 meter cube. Okay, then next, assume 1% of steel of the weight volume of the concrete. The volume of the steel is equal to 0.01 into 10, that means 0.1 meter cube. Weight is equal to 0.1 into 7850, that means 785 kg. Take 1 kg of binding wire for every 100 kg of the steel. The weight of the binding wire is equal to 7.85, say 8 kg. For 10 meter cube, materials required is equal to cement, sand, aggregate, steel, binding wire. ओके, उस सब के क्वांटिटीज हमने फाइंड आउट किया, उसका रेट लिखा, मल्टीप्लाई किया। देन लेबर्स कितने चाहिए, तो लेबर्स फॉर मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग कंक्रीट एक्सेट्रा। तो पहले तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, बाइंडिंग वायर, सनरेज। ओके, तो टोटल इतना मटेरियल चाहिए। लेबर कितना चाहिए, इतना चाहिए। 10 मीटर क्यूब के लिए लेबर्स फॉर मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग द कंक्रीट फॉर 10 मीटर क्यूब 500 पर मीटर क्यूब, तो 5000। बट कॉस्ट ऑफ हायरिंग द मिक्सचर, तो लमसम अमाउंट 1000 रुपीज। लेबर फॉर कटिंग, binding of the reinforcement steel is equal to 785 kg, that means 5 rupees per kg. Labor for centering and shuttering, लमसम हम ले लेते हैं 5000. Total labor cost is equal to this. Total labor and material cost is this. Add 1.5% water charges, जो भी आया उसका टोटल कॉस्ट जो भी आया उसका 1.5% करेंगे तो इतना मिलेगा। देन 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट किया तो ये मिला। ओके, इसका 10% किया तो टोटल कॉस्ट फॉर 10 मीटर क्यूब इज दिस यूनिट रेट, दैट मीन्स ये 10 मीटर क्यूब के लिए है। अभी 1 मीटर क्यूब के लिए फाइंड आउट करना है तो 9680 मीटर क्यूब। Common proportion of the mortar for the brickwork, cement, sand is 1 jam 4 or 1 jam 6. Common proportion of the mortar for the plaster work is 1 jam 3 and 1 jam 4. Then the conventional concrete grades में proportion कितना आएगा, M 7.5 में ये है 1 jam 4 jam 8, then M 10 में
1 जैम 3 जैम 6, M15 में 1 जैम 2 जैम 4, M20 में 1 जैम 1.5 जैम 3, देन M25 में 1 जैम 1 जैम 2. Standard labor requirement as per NBO. Okay. The work as 28.30 cubic meter, that means 1000 cubic meter. Excavation in the foundation, trenches, etc. in ordinary soil, including the disposal up to 30 meter and lead and lift of 1.5 meter. कितना चाहिए? 5 builders and 4 laborers. Okay. Then refilling excavated earth in foundations, plinth, etc. including the consolidation in 15 centimeter layer. तो कितना चाहिए? 3 builders, 2 laborers and 0.5 bistis. Then cement concrete work per 2.83 cubic meter, तो 100 cubic feet. ओके तो क्या आएगा? लेइंग सीमेंट कंक्रीट 0.25 मिशन, 2 builders, देन 3 लेबर्स एंड 0.75 मिस्त्री. अभी मिस्त्री क्या है? मिस्त्री दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्टर और कोऑर्डिनेटर. मिशन दैट मीन्स स्किल्ड लेबर. बेल्डर दैट मीन्स मेल कुली, देन लेबर फीमेल कुली. ओके एंड बिस्ती क्या है? तो वाटर स्प्रिंकलर, दैट इज कॉल्ड बिस्ती. Then standard labor requirement as per NBO. तो RCC वर्क में लेइंग reinforced concrete 2.83 cubic meter, तो लेबर्स कितने चाहिए? 0.25 मिशन, 2 welders, 3 laborers, 0.75 bistis. Then centering and shuttering for the flat surface is 9.6 square meter, तो 4 welders and 4 carpenters. Reinforcement work for RCC 1 क्विंटल पर 100 kg, तो ब्लैक स्मिथ और फीटर 1 बिल्डर्स. ब्रिक वर्क पर 100 क्यूबिक मीटर. ओके then brick work per 10 cubic meter, तो first class brick work in 1 jam 4, cement mortar in superstructure, partition wall, junctions of the roof, parapet walls. नंबर ऑफ लेबर्स कितने चाहिए? तो 0.5 मिस्त्री, 8 मेशन, 16 मजदूर एंड 2 बिस्तिस. ओके फ्लोरिंग के लिए तो 4 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग 40 स्क्वायर मीटर, तो कितना आएगा? मेशंस 5 मेशंस, 4 बेल्डर्स, देन 3 लेबर्स, 1 बिस्ती. फिनिशिंग के लिए प्लास्टरिंग विथ एनी मोर्टार 12 mm थिक 40 स्क्वायर मीटर, तो 0.5 मिस्त्री, 3 मेशंस, 3 लेबर्स, 1 बिस्ती. वाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग 60 स्क्वायर मीटर, तो क्या आएगा? 1 वाइट वॉशर, 1 मजदूर. पेंटिंग 2 कोट्स ऑन बोर्ड और स्टील 10 स्क्वायर मीटर, तो क्या आएगा? 3 पेंटर्स एंड 2 मजदूर्स.